Guys, welcome back to the channel after the weekend. Happy Republic Day to all of you. And let's start today's topic. We were dealing with indication for post-surgical radiotherapy. Okay. Now, the indication and rationale for considering post-surgical radiotherapy are as follows. First one is T3 or T4 lesion. There is a strong likelihood that surgery cannot remove all cancer cells either because of the large surface area of the tumor or because it has invaded the anatomical barrier. या तो ट्यूमर का सरफेस एरिया लार्ज है या तो ट्यूमर एनाटॉमिकल बैरियर को इन्वेड कर चुका है. तो ऐसे लीशन में T3 और T4 लीशन में देयर इज़ अ नीड फॉर पोस्ट सर्जिकल रेडियोथेरेपी. Now, positive margin on the final pathology, positive or even close margin as seen receive of final pathology indicate that at least some cancer cells have remained in the tissue. तो अगर फाइनल पैथोलॉजी में हम लोग को दिख रहा है मार्जिन्स, तो हम ये मानते हैं कि कैंसर सेल अभी तक है, पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हुए. तो दीज टाइप ऑफ लीजन ऑल्सो नीड पोस्ट सर्जिकल रेडियोथेरेपी. नाउ extracapsular invasion. If the final pathology shows one or more than one lymph node positive for cancer and cancer cells are extended into or beyond the lymph node capsule, a high probability exists that the cancer cells have escaped the facial sheath and are now adherent to the new structure. तो ये ऐसा बोल रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा कैप्सुलर इन्वेजन हो गया है तो उस केस में भी हमको पोस्ट सर्जिकल रेडियोथेरेपी लगेगा. मतलब अगर फाइनल पैथोलॉजी में वी आर सीइंग वन और मोर देन वन लिम्फ नोड positive for cancer or cancer cells are extending into or beyond the lymph node capsule. So there is a high probability that cancer cells have escaped the facial sheath and वो किसी और other structure में adherent हो चुके हैं. Now last one is 4 or more lymph node positive for cancer. This is evident that the primary site has a strong propensity for regional metastasis. Because even a thorough or complete radical neck dissection usually leaves some small lymph node, these nodes may harbor residual cancer cells. तो ऐसे नोड रेसिडुअल कैंसर सेल्स को हार्बर करते हैं. So if there is 4 or more lymph node positive for cancer. Okay, there are some limitation to post-surgical radiotherapy. First, we cannot begin immediately after the surgery. क्यों? Because of the necessity for patient रिकवरी एंड टिश्यू हीलिंग. क्योंकि पेशेंट का रिकवरी और टिश्यू हीलिंग भी चाहिए, इसलिए पोस्ट सर्जिकल रेडियोथेरेपी हम लोग इमीडिएटली बिगिन नहीं करते. द बेस्ट टाइम टू बिगिन इज़ अबाउट 6 to 8 weeks फॉलोइंग सर्जरी व्हेन द हीलिंग प्रोसेस इज इन इमीडिएट फेज. जब हीलिंग प्रोसेस अपने इमीडिएट फेज में है, दैट इज़ अबाउट 6 to 8 weeks आफ्टर द सर्जरी, उस समय हम लोग पोस्ट सर्जिकल रेडियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं. ठीक है. मैच्योर हीलिंग past 8 weeks is associated with an accumulation of scar tissue with less and less water. तो जो मैच्योर हीलिंग होता है 8 week के बाद, इट इज़ एसोसिएटेड विद द accumulation of scar tissue which has less water content. Because radiotherapy depends on ionizing the abundant water molecule in tissue into active free radical, which in turn affects the DNA of cancer cell. तो रेडियोथेरेपी क्या करता है, जो अबंडेंट वाटर मॉलिक्यूल है उनको आयनाइज करता है इनटू एक्टिव फ्री रेडिकल, और ये जो एक्टिव फ्री रेडिकल है वो अफेक्ट करते हैं डीएनए ऑफ द कैंसर सेल. अगर रिड्यूस टिश्यू वाटर कंटेंट हुआ तो रेडियोथेरेपी का इफेक्टिवनेस भी डिक्रीज हो जाएगा. सो रिड्यूस टिश्यू वाटर कंटेंट रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ रेडियोथेरेपी.
Beyond 8 weeks, the value of post surgical radiotherapy is diminished and is exceeded by its साइड इफ़ेक्ट. और 8 वीक्स के बाद, आफ्टर 8 वीक्स क्या होता है कि उसका जो पोस्ट सर्जिकल रेडियोथेरेपी का जो बेनिफिट्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है एंड साइड इफ़ेक्ट स्टार्टेड increasing. Okay, that's all for today's class. We'll be continuing this in the next class. Till then, like, share, subscribe and comment.